Okay, good morning. Today we will discuss about a renewable energy topic, that is the ocean thermal energy conversion. So first of all, we know that what is ocean thermal energy conversion and what is primary resource to generate the electricity from OTEC. So first of all, as we know that the ocean, where the availability of a huge amount of the water that are available in the ocean. So we make a temperature difference accordingly. The surface of the temperature of the ocean and at the depth of the 1 kilometer up to 1.5 kilometer, the range of the temperature gradients, that is the difference in between the 14 to 15 degrees centigrade, the temperature difference will be occurred. Because we know that in the atmospheric temperature, the temperature lies in between the 25 to 30 degrees centigrade and the sea level temperature will be accordingly 27 degrees centigrade. But when we go at the depth below the 1000 meter, the temperature of the water will be around 7 to 10 degrees centigrade. So the temperature difference in between surface and below the surface, that is around 20 degrees centigrade, the temperature gradient will be occur. So this temperature gradient that causes the electrical energy is obtained by making an operation by the ocean thermal energy principle. So here in the video we discuss about how the working principle of OTEC, how the energy is be obtained through ocean thermal energy, and where the exact location of the OTEC. First of all, we know that there are the several methods from the renewable energy resources from which we generate the electricity. There are various forms of the electricity by different method, such as the wind energy, solar energy, tidal energy, geothermal energy, magneto-hydrodynamics. But in the ocean thermal energy conversion, we make the temperature difference, and by this we obtain the electricity. Now come to the main content that we will discuss in today's video, that is the OTC work, design, allocation, application, its benefit and potential and market of the OTC. Now come to the point of the first, that is the introduction. ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को हम शॉर्ट फॉर्म में O फॉर ओशियन, T फॉर टेम्परेचर, E फॉर एनर्जी एंड C फॉर कन्वर्जन. तो OTEC का जो प्रिंसिपल है, इट डिफरेंट of the temperature in between the top surface and the below the 1000 meter. Continuously, it covers the 70% of the Earth's surface. This temperature difference contains the vast area. Basic principle of the OTEC. OTEC is a manifestation of solar energy. The top layer of the ocean receives solar heating. The bottom layer receives water from the polar region. OTEC uses the vertical temperature gradient in the ocean as a heat sink. OTEC system is based on the Rankine cycle. अब सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है OTEC का, अर्लियर अभी हमने डिस्कस किया कि सी पे जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें, और सी पे अगर हम बिलो जाए 1000 मीटर तो वहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप टू 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वहाँ पे हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिलता है. अब सन से जो डायरेक्ट हीट आती है वो वाटर के ओशन के जो सरफेस पे पड़ती है, जिससे कि ऊपर का वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है. अब अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो सी लेवल के सरफेस को हम हॉट सोर्स बोलेंगे और उसके बिलो 1 किलोमीटर बिलो सरफेस को हम सिंक बोलेंगे. तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द रैंकाइन साइकिल. रैंकाइन साइकिल की वर्किंग जैसे होती है,
जैसा हम लोगों ने अर्लियर वीडियोस में भी पढ़ा कि रैंकाइन साइकिल वर्क बेस्ड अपॉन द स्टीम जब जनरेट होती है तो उस स्टीम को हम टरबाइन के ब्लेड्स भेजते हैं, जैसे ही टरबाइन की ब्लेड्स मूव करती है उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कैसे हीट मिलेगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द वर्किंग फ्लूइड विच बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी लो। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ऐसा वर्किंग मीडियम और फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा। नाउ बेसिक प्रिंसिपल जो है OTEC का, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द रैंकाइन साइकिल वर्किंग। रैंकाइन साइकिल से जो हीट आती है स्टीम की, उसी स्टीम के प्रेशर से हम प्लेट को मूव कराते हैं। इस OTEC के वर्किंग में अगर हम बात करें तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है, ओवरप्रेडेटर, कंडेंसर, टरबाइन और आपका वर्किंग फ्लूइड, कोल्ड वाटर पाइप, ये आपके मेन इसके कंपोनेंट हैं। एवोपरेटर जो मेन वर्किंग कंपोनेंट है, एवोपरेटर है आपका, टरबाइन है एंड द वर्किंग फ्लूइड दैट पासेस इनटू द पाइप। तो यहाँ से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इन द OTEC that the working principle is based upon the working fluid because its temperature will be low of the working fluid. So one is the evaporator. By this, when the warm surface seawater, the temperature that are used, higher temperature on the surface of the water and cold water जो कि है नीचे से वाटर को हम एक तरीके से पाइप के मीडियम से भेज रहे हैं और वार्म सरफेस को ऊपर से हम भेज रहे हैं। तो एवोपरेटर के थ्रू हमें हीट जो है वो मिल रही है और हीट मिलने के बाद टरबाइन को रोटेट कराएगी। अब इसमें हम वर्किंग फ्लूइड को पंप के मीडियम से सर्कुलेट कर रहे हैं। एक तरफ से वर्किंग फ्लूइड जाएगा जिसका लेस वर्किंग बॉइलिंग टेम्परेचर होगा और दूसरी तरफ से वार्म वाटर जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा वो टरबाइन को जाएगा, टरबाइन रोटेट होगी, रोटेशन से हम जनरेटर लगा देंगे, जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होगी। रेस्ट जो है वो हीट जो है वो कंडेंसर में जाएगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के ब्लेड से एग्जॉस्ट में रहेगी, उसको अगेन हम इनसाइड द सी सेंड कर देंगे। हाउ द OTEC वर्क, OTEC का जो वर्किंग प्रिंसिपल है that the warm surface ocean water is pumped to the evaporator which transfer heat at which transfer heat to the working fluid. Working fluid is turning into a high pressure vapor. The turbine spins as the vapor rushes through it. In the low pressure condenser, the vapor is cooled by the nearly freezing water brought up from the ocean depth, and after condensing, the working fluid is sent back to the boiler to be refused and to repeat the cycle. जैसे कि अभी हमने इसका प्रिंसिपल बताया था, वर्किंग आपकी सेम वार्म सरफेस का जो वाटर है उसको हम पंप के थ्रू एवोपरेटर में भेजते हैं और वहाँ से जो हीट आती है वो लेस वर्किंग फ्लूइड को हीट करने में काम में आता है। वर्किंग फ्लूइड इज टर्निंग इनटू ए हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही ये वर्किंग फ्लूइड जो है वो एवोपरेटर के थ्रू पास होता है। The turbine generator spins as the vapor rushes through it. In the low pressure condenser, the vapor is cooled by the nearly freezing water brought up from the ocean depth. After condensing, the working fluid is sent back to the boil to the refuse and to repeat the cycle. Now, electricity production. Three basic OTEC systems have been demonstrated to generate the electricity. So there are three types of the ocean thermal energy conversion. One is the open cycle OTEC, next is closed cycle OTEC, and then hybrid cycle OTEC.
working of the closed cycle OTEC, that in the closed cycle OTEC, warm seawater vaporize the working fluid. जो ओशियन का वार्म वाटर है वो वेपराइज होता है ए वर्किंग फ्लूइड सच एज एन अमोनिया, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसी को हम वर्किंग फ्लूइड में इस्तेमाल करते हैं। हीट एक्सचेंजर, जिसको हम एवोपरेटर कहते हैं। तो इन द क्लोज साइकिल एवोपरेटर, टर्बो जनरेटर एंड कंडेंसर, वार्म वाटर इन, डिस्चार्ज वाटर टू सी, working fluid vapor, turbo generator, working fluid vapor to the condenser, cold water in and discharge water to the sea. Closed cycle OTEC system, warm seawater vaporize a working fluid such as ammonia flowing through a heat exchanger, जिसको हम evaporator कहते हैं. The vapor expands at moderate pressure and turns turbine coupled to generate the produce electricity. The vapor is then condensed in condenser using cold seawater pumped from the ocean depth through a cold water pipe. जो वेपर है वो कंडेंस होकर कंडेंसर के थ्रू सी में, जहाँ पे कोल्ड वाटर है वहाँ पे हम भेज देते हैं फ्रॉम द डेप्थ थ्रू ए कोल्ड वाटर पाइप. द कंडेंस वर्किंग फ्लूइड in the closed cycle OTEC system, warm seawater vaporized a working fluid such as ammonia flowing through a heat exchanger evaporator. The vapor expands at moderate pressure and turns a turbine coupled to a generator that produces electricity. The working fluid remains in a closed cycle system and circulate continuously. तो जो लेआउट है वर्किंग ऑफ द क्लोज साइकिल OTEC, वो मेन हमारा जो डिवाइसेस यूज हो रही है, एक तो एवोपरेटर, टर्बो जनरेटर हम इसलिए लगाते हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको हम वर्किंग फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब वो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जाएगी स्टीम, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज ब्लेड्स को मूव कराएगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होगी. नाउ कम टू द ओपन साइकिल OTEC. Open cycle OTEC, we use the vacuum chamber flash evaporator and turbo generator as well as the condenser as in the previous closed cycle OTEC. In an open cycle OTEC system, warm seawater is the working fluid. So we use the warm water as a working fluid. The warm seawater is flash evaporated in a vacuum chamber to produce steam at an absolute of about 2.4 kilopascal. मेनली हमारा मेन पर्पस है कि जब भी हम स्टीम को टरबाइंस के ऊपर भेजते हैं तो वहाँ पे स्टीम का प्रेशर होता है वो एक अप टू 2 से 2.4 किलो पास्कल के बीच होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो उस हिसाब से हमारी ब्लेड्स मूव नहीं करेगी, जिसके थ्रू हमें क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. The steam expands through a low pressure turbine that is coupled to a generator to produce electricity. The steam exciting a turbine is condensed by cold seawater pump from the ocean depth through a cold water pipe. If a surface condenser is used in the system, the condensed steam remains separated from the cold seawater and provide a supply of the designated water. So in the figure we can say that the distillation, the water of the sea in and non
condensable gases, where vacuum chamber, flash evaporator, warm seawater discharged to the sea, and the turbocharger, which is attached to the condenser and the cold seawater to sea. Now हाइब्रिड साइकिल, अगर हम ओपन साइकिल OTEC को और क्लोज साइकिल OTEC को आपस में मिला दें, so that known as the hybrid cycle. A hybrid cycle combines the feature of both the closed and open cycle system. In a hybrid OTEC system, warm seawater enters a vacuum chamber where it is flashed evaporated into steam, which is similar to the open cycle evaporation process. अगर हम हाइब्रिड साइकिल की बात करते हैं तो वन साइड से वैक्यूम चैम्बर जो कि फ्लैश वहाँ पे फ्लैश एवोपरेटेड स्टीम मिलती है एंड जो कि सिमिलर है ओपन साइकिल एवोपरेशन प्रोसेस में, और जो वर्किंग फ्लूइड है जो कि क्लोज साइकिल में हम अमोनिया वेपराइजर का यूज़ करते हैं कि लो वर्किंग फ्लूइड दैट कन्वर्ट into the form of the high pressure working fluid, and this working fluid will be used. Now the vaporized fluid then drives a turbine that produces electricity. The steam condenses with the heat exchanger and provides the desalinated water. OTEC classification. Depending on the location, the OTEC that the plant setup and installation of the OTEC that is based according to the allocation criteria that depend upon the based, land-based, shelf-based, plotting plant and submerged plant. So depending on the cycle use, open, closed and hybrid cycle. There are the three type of the plant: open cycle, closed cycle and hybrid cycle plant. Now this is the basic working of the OTEC. We can here see that the working phenomena occurs. This is the sea surface and another is the bottom surface. We can see that in the sea surface the mixed water drain is to be here, and at the bottom the cold water will be the intake. So the cold water intake, cold water pipe एक attach किया है और surface पे hot water pipe attach किया है, and these are the working principle of the OTEC. Now site consideration. The factors to be considered while choosing a site: thermal gradient in the ocean, topography of the ocean floor, meteorological condition, seismic activity, availability of the personnel to operate the plant, infrastructure, airport, harbors, etc., local electricity and designated water demand, political, ecological constraint and cost and availability of the shoreline sites. तो जब भी हम साइट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो है थर्मल ग्रेडियंट इन द ओशन। फैक्टर्स जो मेन कंसर्न है हमारा थर्मल ग्रेडियंट ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए। टोपोग्राफी ऑफ द ओशन फ्लोर, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ऐसा ना हो कि बहुत वेट वो कंडीशन जिसके वजह से वार्म सरफेस जो हमें मिलना चाहिए वो ओशियन का जो सरफेस लेवल है उसी का टेम्परेचर बहुत कम हो इनटू द विंटर सीजन। सेसमिक एक्टिविटी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन की फिनोमेना हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सनल टू ऑपरेट द प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, हार्बर्स, लोकल इलेक्ट्रिसिटी एंड desalinated water demand, political ecological constraint, and the cost and availability of the shoreline sites. Now, OTEC application. Ocean thermal energy conversion system and many applications are uses. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शिप्स हैं जहाँ पे पावर प्लांट आसानी से इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता है उस जगह पे हम देयर आर सम अल्टरनेटिव ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम that will be obtained such as the OTC, tidal winds, and in this
The electricity is obtained by the different mechanism process. OTEC can be used to generate the electricity, the desalinate water, support deep water, mariculture, provide refrigeration and the air conditioning, mineral extraction. These complementary processes make OTEC system attractive to industry and Iceland communities, even if the price of the oil remains low. OTEC इंडस्ट्री के लिए या सी जहाँ पे सी शोर वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि जो प्राइस है ऑयल की वो डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है सो वी यूज़ द OTEC in that particular locations. OTEC can also be used to produce methanol, ammonia, hydrogen, aluminum, chlorine and other chemicals. तो इसका एक और एग्जांपल है एप्लीकेशन है जिससे हम मेथनॉल को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनिया को भी हाइड्रोजन को भी एल्यूमिनियम क्लोरीन एंड अदर केमिकल्स नाउ OTEC एप्लीकेशंस सन से सी वाटर का सरफेस वार्म होता है जाहिर सी बात है एक 1000 मीटर जो सरफेस है उससे 1000 मीटर बिलो जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम होगा उस OTEC को हम डिसलिनेटेड वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो कि ड्रिंकिंग और इरिगेशन में आता है डिस्टिल वाटर को ऑब्टेन करते हैं we filter the water by the process and this the cold water discharge so phytoplankton, zooplankton, cold water refrigeration and air conditioning the different process will be occurred and the different applications of the OTEC. Now the deep water supported mariculture. Deep drawn seawater from an OTEC plant is cold, rich in nutrients, relatively free of pathogens and available in the large quantity. It is an excellent medium for growing phytoplankton and microalgae which in turn support a variety of the commercial valuable fish and shellfish. The large constant flow of water pumped from an OTC plant will reduce disease and contamination in the ponds. Marine life therefore can be grown in high density. जैसे कि OTC प्लांट लगाने से क्या होता है कि ज़मीन और सी के अंदर बहुत सारी जो आपके मैरिन की लाइफ्स हैं जो फिशेस हैं वो सारी के सारी चीज़ पे उसका इफेक्ट आता है जिसकी वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा डीप वाटर शोर में चले जाते हैं जिसके थ्रू ये OTEC एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है इनटू द डीप वाटर सपोर्ट मैरिकल्चर इन एडिशन डीप ग्राउंड कोल्ड वाटर कैन बी मिक्स विद हॉट वाटर सरफेस allowing local communities to culture a broad variety of the species. Now, desalinated water. Desalinated water can produce in open or hybrid cycle plant using surface condenser. In a surface condenser, the spent steam is condensed by indirect contact with the cold sea water. This condensate is relatively free of impurities and can be allocated and sold to local communities where natural freshwater supplies for agriculture are drinking limited. So desalinated water, we know that the quality of the water of the sea is not, there are some salt may be there in the sea water. So we make a desalination process. By this, the water can be used directly in the in the buildings and that useful for the drinking purpose. Now the refrigeration and the air conditioning. The cold that occurs at temperature 5 degrees centigrade and 41 degree Fahrenheit, seawater made available by an OTEC system creates an opportunity to provide large amount of cooling to operations that are related to or close to the plant. The cold seawater delivered to an OTEC plant can be used in chilled water whilst to provide air conditionings or buildings.
The benefits of the OTEC: नो फ्यूल बर्न, कोई भी अलग से हमें फ्यूल बर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सन के ही एनर्जी से या सन के ही टेम्परेचर से हम सी के वाटर की सरफेस को हीट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस नहीं होगी, क्योंकि ना कोल बर्न हो रहा है ना कोई फ्यूल बर्न हो रहा है। लेस देन 1% of fossil fuel plant has significantly potential to provide the clean, cost-effective electricity for the future. So, our main advantage of the ocean thermal energy conversion is that it is no emissions produced, it is no greenhouse effect affected. The nutrients rich cold water promotes mariculture, produces desalinated water for industrial agriculture and residential uses, cold water for air conditioning, fishing, cold water drawn from the tap is nutrients rich and can significantly increase fishing and freshwater production. Disadvantage: an OTEC facility requires a substantial initial capacity outlay. The main disadvantage of the OTEC, जैसे कि समुद्र में बहुत सारी जो आपका ओशन से रिलेटेड है, जैसे फिशेस वगैरह हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें पाइपलाइन डालते हैं, तो जो मूवमेंट होता है वो इजी ना होके कोई भी उसमें जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वाटर में वो चीज़ डेवलप हो जाते हैं। OTC is only visible at relatively isolates sites deep tropical ocean. From such sites, the power and marine products must be transported to market. OTEC is ecologically controversial, at least untested in large scale and over a long period. Now, these are the temperature difference between the surface and the depth of the 1000 meter. The longitudinal and latitude according to the equator line will make the less than 18 degree centigrade water availability 18 to 20 degree centigrade, 20 to 22 degree centigrade, 22 to 25 4 degree centigrade, more than the 25 degree centigrade, 24 degree centigrade, and depth is less than 1000 meter. The market of the OTC, ocean thermal energy conversion plants may be competitive in the small Iceland with the relatively high cost of the diesel generated electricity and desalinated water. For floating closed cycle plants rated at 40 megawatts are large that house a factory of transmit electricity to shore via a submarine power cable. जैसे कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेके अगर हम कहीं सब मेराइन या जहाँ पे भी हमें सी में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या हमारे शिप्स में, तो यहाँ से लेके वहाँ तक हम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो we make a such an arrangement of the OTC, but it's some disadvantage in the OTC that we use the more uh, cost effective or installation is to be expensive to the OTC. Now the conclusion, OTEC use the difference in temperature between warm water surface and seawater and cold deep seawater to produce electricity. With ocean cover 70% of Earth's surface that absorbs sunlight, OTEC is a prospective alternative source of energy for human use. Besides can be used to generate electricity, OTEC can also be used to desalinate water, support deep water, mariculture, refrigeration and air conditioning, and mineral extraction. The capital cost of the installation is still extremely high, and at the present time, the technology remains at the planning, feasibility, and the steady stage. We make a research area into the different processes, the refrigeration and the air conditioning, desalinating water,